हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू आवर क्वेश्चन सीरीज that is mainly a question bank to improve your knowledge bank, and I'm so glad I could help you out. I'm Shweta Malti, welcome you again to our channel VidyarthiPro learning platform specially designed for the students like you. And stay tuned for the updates regarding CUET, intermediate, BCom, BBA, NET-JRF, UPHESC, UPPSC, UPSC and many other entrance examination papers. So in the series of business studies, आज हम यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे with very important multiple choice questions of the business studies unit 5 organizing. Okay, so it's time to let's start our question series, and our first question is question number 1. What is organizing in management? दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स. ऑप्शन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क टू एम्प्लॉयज. ऑप्शन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज. एंड द ऑप्शन नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज. And the correct answer is option number 1, the process of creating a structure of tasks and resources to achieve goals. मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट करना जिससे कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि क्रिएट करता है स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज टू अचीव देयर गोल्स ऑफ इंडिविजुअल गोल्स एज वेल एज द गोल्स ऑफ कंपनी. ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा की एलिमेंट है जो कि की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि इन्वॉल्व करता है अरेंजिंग रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़, पीपल टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, इट हेल्प्स टू डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ऑप्शन नंबर 2, इट हेल्प्स टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली. ऑप्शन नंबर 3, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ चेन ऑफ कमांड. एंड ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. इन दिस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बताना था, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटिव, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से. इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग ये एक ऐसा क्रिटिकल फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, coordination and collaboration and ensures that everyone is working towards a common goal. हर कोई एक common goal की ओर काम कर रहा है. And our next question is which of the following is a characteristic of a well organized company, and the options are option number 1, clear job description and responsibilities. Option number 2, no communication barriers between departments. And option number 3, centralized decision making authority. And option number 4 is all of the above. The question says कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है. Therefore, option number 1, clear job description and responsibility is the correct answer for this question. क्योंकि एक well organized company is the one that is able to efficiently and effectively allocate resources, manage processes and workflows, and achieve its goals and objectives while maintaining a culture of continuous improvement and innovation. Maintaining a culture means of continuous improvement and innovation is द बेसिक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द रिसेंट अपडेट्स, फॉर द इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव वर्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा. Our next question is what is the purpose of organizing in a company, and the options are option number 1, to increase employee satisfaction. Option number 2, to minimize cost. Option number 3, to achieve the company's objective. And option number 4, to increase profits. And the correct answer for this question is option number C, to achieve the company's objective. क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन अ कंपनी. एक जो ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर है उसका कंपनी में क्या पर्पज़ होता है. सो द बेसिक पर्पज़ इज़ टू अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव. जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव करना होता है. द पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन अ कंपनी इज़ टू एलोकेट रिसोर्सेज, establish a framework for tasks and responsibilities, create efficient workflows, facilitate effective communication, coordination between employees, different departments to achieve the company's goal and objective, as well as individual जो employees हैं उनके भी goals और objectives achieve हो सके. Our next question is what is the role of a manager in organizing.
And the options are option number 1, to ensure that all employees are following company policies and procedures. Option number 2, to communicate with employees on a daily basis. Option number 3, to develop and implement an organizing plan. And option number 4, to motivate employees. And the correct answer for this question is option number C, to develop and implement an organizing plan. जो मेन और बेसिक रोल होता है एक मैनेजर का इन एन ऑर्गेनाइजेशन is to develop and implement an organizing plan. The role of manager in organizing is to identify and divide tasks. जितने भी टास्क हैं पहले वो बल्क लेवल पे मतलब होल लेवल पे कंपनी के पर्सपेक्टिव कंपनी के लेवल पे वो आइडेंटिफाई करेगा टास्क ऑफ द कंपनी, फिर उसको डिवाइड करेगा डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में, फिर उन्हें डेलीगेट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर रोल्स एंड रिलेशनशिप, डेलीगेट अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन चैनल्स एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स टू एंश्योर दैट इंडिविजुअल and department work together effectively towards achieving the company's goals and objectives. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस से है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग. And the options are option number 1, organizing involves developing a structure of tasks and resources, while planning involves setting and goals and objectives. Option number 2, organizing involves allocating resources, while planning involves developing strategies to achieve goals. Option number 3, organizing involves creating policies and procedures, while planning involves implementing those policies and procedures. And option number 4, organizing and planning are the same thing. Okay, so any guesses? And the correct answer for this question is option number 1, organizing involves developing a structure of tasks and resources, while planning involves setting goals and objectives. जो मेन और बेसिक डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग में कि इज दैट प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीव देम. प्लानिंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स को सेट करना, जो भी स्ट्रैटेजीज मीन्स रणनीतियाँ हैं उन्हें बनाना फॉर अचीविंग द गोल्स. वाइल ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अरेंजिंग रिसोर्सेज पीपल एंड एक्टिविटीज़ टू अकम्प्लिश दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देयरफॉर ऑप्शन ए, organizing involves developing structure of tasks and resources, while planning involves setting goals and objectives is the correct answer for this question. Our next question is, which of the following is not a step in the process of organizing? And the options are option number 1, establishing authority relationship, option number 2, assigning tasks, option number 3, motivating employees, and option number 4, providing resources. And the correct answer for this question is option number C, motivating employees. मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि कोई स्टेप नहीं है इन अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. मोटिवेशन इज नॉट एन एक्सप्लिसिट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशन एक एक्सप्लिसिट पार्ट है, it's an implicit part of the organization process. It is an essential aspect of managing people and ensuring that they are working towards achieving an organizational goal. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इन सारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है. एंड द ऑप्शंस आर option number 1, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, option number 2, फंक्शनल स्ट्रक्चर, option number 3, डिविजनल स्ट्रक्चर, एंड option number 4, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number D, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. जो 4 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं वो है, पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वन इज फ्लैट स्ट्रक्चर, ना कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एंड हियर क्वेश्चन अराइजेस कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है बाय विच वर्क फ्लोज थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाउज ग्रुप्स टू वर्क टुगेदर विद इन their individual functions, जो कि individual functions to manage task. हिंदी में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि संगठनात्मक संरचना वह विधि है जिसके द्वारा एक संगठन के माध्यम से कार्य प्रवाहित होता है और समूहों को कार्य के प्रबंधन के लिए अपने व्यक्तिगत कार्यों में एक साथ काम करने की अनुमति देता है. दिस इज समथिंग लाइक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर 2, प्रोडक्ट लाइन्स, ऑप्शन नंबर 3,
specialized functions. Option number 4, customer segments. And the correct answer for this question is option number C, specialized function. In a functional structure, the employees are organized according to their specific job or expertise. This means जो कि employees are grouped together based on their skill set or area of specialization, such as marketing, finance, operations or human resources. So in a functional structure में जो employees होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, उनका जिनमें स्पेशलाइजेशन होता है. Our next question is uni product manufacturing company must adopt what? Options are option number 1, functional structure, option number 2, divisional structure, option number 3, both A and B, and D is none of the above. And the correct answer for this question is option number 1, functional structure. Functional structure एक ऐसा uni product manufacturing company है, uni product manufacturing company को functional structure follow करना चाहिए. Functional structure can be suitable for a uni product manufacturing company, particularly if the company has a strong focuses on efficiency and specialization. जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में ही देखा था कि functional structure specialized functions को अडॉप्ट करता है, तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए उनकी स्पेशलिटी होती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, एम्प्लॉयज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी. ऑप्शन नंबर 2, एम्प्लॉयज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइन्स. ऑप्शन नंबर 3, employees are organized according to specialized functions. Option number 4, employees are organized according to customer segments. And the correct answer for this question is option number 2, employees are organized according to product lines. Which of the following best describes divisional structure? Divisional structure का best definition है कि mostly used by multinational corporations and large organizations. ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज दे हैव वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, उनके पास बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, हेंस मे बेनिफिट फ्रॉम अडॉप्टिंग the strategy. Our next question is organizations having plans of expansion and diversification must adopt what? Options are option number 1, functional structure, option number 2, divisional structure, option number 3, both A and B, and option number 4, none of the above. And the correct answer for this question is option number B, divisional structure. डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, टेरिटरी और रीजन. दिस इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर. ईच यूनिट हैज़ अ डिविजनल मैनेजर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कंपनी. देयरफॉर जिनका प्लान होता है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होगा उन्हें डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए. एज द कंपनी एक्सपांड्स into new market or product lines, it may need to adopt a divisional structure where each division operates as a separate business unit with its own functional departments such as marketing, finance, operations and human resources. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ये डिनोट करता है कि डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. ऑप्शन नंबर 2, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट. ऑप्शन नंबर 3, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. ऑप्शन नंबर 4, इट लेड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. And the correct answer for this question is option number C, difficult to fix accountability. So difficult to fix accountability means जवाबदेही को फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर. सो ये एक तरह का ड्रॉबैक है ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. जैसे कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल मिशन रहा होगा, अगर एक ऑब्जेक्टिव या एक ऑर्गेनाइजेशन उसे फुलफिल करने में फेल हो जाता है तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो ब्लेम करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स को, एज वेल एज डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज़ गोइंग अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से हम लैक कर रहे हैं या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है.
So this is a kind of drawback for the functional structure. Therefore, option number C, difficult to fix accountability, is the correct answer for this question. That is mainly a drawback of functional structure. Functional structure का drawback है. Functional structure वो structure होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि किसी भी कंपनी का उनके फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे क्लासिफाई कर देना. दैट इज मेनली अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. And our next question is, which of the following best describes a formal organization? And the options are: option number 1, a group of individuals who come together for a specific purpose. Option number 2, a group of individuals who share a common interest. Option number 3, a group of individuals who informally interact with each other. And option number D, all of the above. And the correct answer for this question is option number 1, that is a group of individuals who come together for a specific purpose. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर है दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक वे. इट हैज़ क्लियर रूल्स, उनके क्लियर रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, गोल्स होते हैं जो कि डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल मेंबर्स. समथिंग लाइक दे आर गोइंग ऑन अ मिशन, वैसा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक डिस्क्रिप्शन रहता है. Our next question is, which of the following is the best describes an informal organization? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? And the options are: option number 1, a group of individuals who come together for a specific purpose. Option number 2, a structured and organized group with the defined roles and responsibilities. Option number 3, a group of individuals who informally interact with each other. And option number D is all of the above. And the correct answer for this question is option number C, a group of individuals who informally interact with each other. एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है उनका, वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं हु कम टुगेदर एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इनफॉर्मली विदाउट एनी क्लियर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर कि कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कि उनकी कोई लिमिटेड बाउंड्रीज है, ऐसा कुछ नहीं होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जैसा. So informal organization is a group of organization, it's a group of people who come together and interact with each other informally without any defined structure or set of rules and regulations, etc. Our next question is, which of the following is an advantage of a formal organization? And the options are: option number 1, greater flexibility and adaptability to changing situations. Option number 2, enhanced communication and collaboration among members. Option number 3, clear roles and responsibilities that help to prevent conflicts. Option number 4, informal interactions that foster creativity and innovation. इन सारे ऑप्शंस में क्वेश्चन का ये कहना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिनोट करता है एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि प्रिवेंट करता है, हेल्पफुल होता है इन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. A formal organization provides clear roles and responsibilities for its members, which helps to prevent conflicts and misunderstandings. It also provides a clear hierarchy and decision-making process, which can enhance the efficiency and effectiveness of the organization. Our next question is, which of the following is an advantage of an informal organization? इन सारे options में से एडवांटेज ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. ऑप्शन नंबर 2, क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट प्रमोट फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी. ऑप्शन नंबर सी, इनफॉर्मल इंटरैक्शंस दैट फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ डिमांड. And the correct answer for this question is option number C, informal interactions that foster creativity and innovation. क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है, इट कैन बी मोर फ्लेक्सिबल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा क्रिएटिव इंटरेक्शंस हो सकते हैं वहाँ पे एक बाउंड्रीज नहीं सेट होती हैं, जो कि लीड करता है एक ग्रेटर इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ. Members of an informal organization are more comfortable with sharing their ideas, friendly, एक टीम वर्क वाला माहौल होता है, which can lead to more dynamic and collaborative environment. Therefore, option C, informal interactions that foster creativity and innovation, is the correct answer as an advantage of the informal organization.
Our next question is the form of organization known for giving rise to rumors is called what? Options are option number 1 centralized organization, option number 2 decentralized organization, option number 3 formal organization and option number 4 informal organization. ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा. Okay, so any guesses? And the correct answer for this question is option number D, informal organization. Informal organization एक ऐसा form of organization है जहाँ पे rise to rumors भी कहा जाता है. Actually, informal organization एक ऐसा network of social and personal relationship है जो कि exist करता है within an organization, operating parallel to the formal structure. ये एक ऐसा network of informal relationships, social group, personal interaction that are not officially recognized by the organization's formal structure. The informal organization emerges naturally among employees as they interact and socialize with each other. Our next question is what is the meaning of delegation? Delegation का क्या मतलब होता है? And the options are option number 1 the process of assigning tasks and responsibilities to subordinates, option number 2 the process of taking one more task and responsibilities as a leader, option number 3 the process of delegating authority to external stakeholders and option number 4 the process of avoiding responsibility and passing it on to others. Delegation का मतलब होता है सौंपना. Therefore option number 1 the process of assigning tasks and responsibilities to subordinates. जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके सुपरवाइजर्स या उनकी जो सुपीरियर्स हैं जो उन्हें प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सबॉर्डिनेट्स इज़ नोन एज डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है इन विच असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सबॉर्डिनेट्स और टीम मेंबर्स. ये इन्वॉल्व करता है गिविंग देम अथॉरिटी, क्योंकि कोई भी काम अगर करना है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिलती है तो उसका एक्सेस या उसकी अथॉरिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयरफॉर ये इन्वॉल्व करता है गिविंग देम अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस रिलेटेड टू देयर असाइन्ड टास्क व्हाइल स्टिल रिटेनिंग ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ डेलीगेशन इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 इट अलाउज द लीडर टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 2 इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय मोरल एंड एंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इट इंक्रीजेज द वर्कलोड फॉर द लीडर, ऑप्शन नंबर 4 it increases the efficiency of the organization. And the correct answer for this question is option number B, it improves employee morale and engagement. Delegation is important in an organization because ये allow करता है team members को to feel free or more empowered and engaged in work. By giving them responsibility and authority, they can develop their skills and knowledges which can lead to greater job satisfaction and motivation of employees as well as the organization. Our next question is what are the potential risks of delegation? Options are option number 1 loss of control and authority, option number 2 poor quality of work or missed deadlines, option number 3 miscommunication and misunderstanding, option number 4 all of the above. And the correct answer for this question is option number D, all of the above. Delegation can come with potential risks such as loss of control or authority, poor quality work or missed deadlines and miscommunication and misunderstanding. It is important for superiors to carefully consider the tasks and responsibilities they delegate and ensure that they provide clear instructions and support to their team members. जो डेलीगेशन प्रोसेस होता है ये उसका एक पोटेंशियल रिस्क होता है. ये सारे ही ऑप्शंस उसमें एक पोटेंशियल रिस्क के फॉर्म में आ ही जाते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइजेशन से. एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग decision making in a single individual or group, option number 2 the process of distributing decision making authority to lower level employees or departments, option number 3 the process of outsourcing business functions to third party providers, option number 4 the process of eliminating hierarchical structures within an organization. And the correct answer for this question is option number B, the process of distributing decision making authority to lower level employees or departments.
एक्चुअली जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती है, वो ही सारे डिसीजंस ले सकती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में वो ये अथॉरिटी जो सब हेड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग से है तो मार्केटिंग का कोई डिसीजन है तो जो मार्केटिंग हेड है वो ले सकता है, जो टॉप लेवल एकदम टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो उनके तक वो बात नहीं जाती है। दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। Therefore, option number B, जो कि process of distributing decision making authority to lower level employees or departments for smooth functioning of employees workflow is known as decentralization. Our next question is, what are the benefits of decentralization? Decentralization के क्या benefits हैं? On the options are option number 1, increased accountability and responsibility among lower level employees. Option number 2, improve decision making speed and efficiency. Option number 3, better alignment of decision with local needs and preferences. Option number 4, all of the above. And the correct answer for this question is option number D, all of the above. डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह के बेनिफिट्स होते हैं उसके, जैसे कि इट कैन प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स, जैसे कि फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम इम्प्रूव करते हैं डिसीजन मेकिंग की स्पीड और एफिशिएंसी। इट इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बन जाती है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड में जो टाइम लगता है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो नहीं होता है, तो इट इंक्रीजेस द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। और जो बेटर अलाइनमेंट ऑफ डिसीजन विद लोकल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस होता है, वो जो बेस्ट डिसीजन हो पाता है वो ले पाते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस पूछ रहा है। And the options are option number 1, decentralization involves distributing decision making authority, while delegation involves assigning specific tasks and responsibilities. Option number 2, decentralization involves centralizing decision making in a single individual or a group, while delegation involves distributing decision making authority. Option number C, decentralization and delegation are the same thing. And the option number 4, none of the above. And the correct answer for this question is option number 1, decentralization involves distributing decision making authority, while delegation involves assigning specific tasks and responsibilities. जो मेन और बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, ये कि डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अचीव करता है टू लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स। और वहीं पर डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल और टर्म्स। Our next question is, what is centralization? Our next question is, what is centralization? Options are option number 1, the process of distributing decision making authority to lower level employees or departments. Option number 2, the process of outsourcing business functions to the third party in providers. Option number 3, the process of centralizing decision making in a single individual or a group. Option number 4, the process of eliminating hierarchical structures within an organization. And the correct answer for this question is option number 3. Centralizing means एक ऐसा process है that decision making in a single individual or a group. Centralization का main और basic मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को bringing things to one central place under unified control. सेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे है जो कि सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही सारी कंपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस ले सकते हैं। देयरफॉर दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। Our next question is, which of the following is not an element of delegation? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि element of delegation नहीं है? And the options are option number 1, accountability, option number 2, authority, option number 3, responsibility, and option number 4, informal organization. And the correct answer for this question is option number D, informal organization. क्योंकि delegation एक ऐसा process है जहाँ पे responsibilities और roles को असाइन किया जाता है किसी भी अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो इनफॉर्मल में तो कोई सबऑर्डिनेट सुपीरियर होता ही नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन।
जो की एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशंस के, दैट आर असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रांटिंग अथॉरिटी, मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी, उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही बन जाती है, इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन एंड ensuring competence. Our next question is, for delegation to be effective, it is essential that response be accompanied with necessary options. Number 1, authority. Option number 2, manpower with necessary manpower. Or option number 3, incentives. And option number 4, promotions. And the correct answer for this question is option number 1, authority. Necessary authority होनी चाहिए फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव. जो भी डेलीगेशन हो वो इफेक्टिव हो, ये इम्पॉर्टेंट ही है, ये एसेंशियल होता है कि दैट रिस्पॉन्स बी अकम्पेन्ड विद अथॉरिटी. फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, इट इज़ एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी accompanied with necessary authority, resources and support. Delegation involves assigning responsibility and authority to another person to carry out specific tasks or make decisions. Authority is the power or right to make decisions, take actions and enforce rules or policies. Our next question is, span of management refers to what? Options are: option number 1, number of managers; option number 2, length of term for which a manager is appointed; option number 3, number of subordinates under a superior; option number 4, number of members in top management. Span of management क्या है? And the correct answer for this question is option number C, number of subordinates under a superior. एक superior के अंडर में कितने subordinates होते हैं वो है span of management. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं. इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर और अ सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली मैनेज. इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल हु रिपोर्ट टू अ सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर. फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या एक HR डिपार्टमेंट है और उस HR डिपार्टमेंट में 4 सबऑर्डिनेट्स हैं जो काम करते हैं, और वो एक ही जो HR मैनेजर है उस कंपनी का, उसको, या फिर एक मार्केटिंग मैनेजर है उस कंपनी का, वो मार्केटिंग सबऑर्डिनेट्स उसको रिपोर्ट करते हैं. देयरफॉर जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है दैट मार्केटिंग subordinates. Our next question is, a tall structure has what? Options are: option number 1, narrow span of management; option number 2, wide span of management; option number 3, no span of management; and option number 4, number of members in top management. जो टॉल स्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं या जो टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है? And the correct answer is option number 1, narrow span of management. A tall structure of organization is the one that has multiple level of hierarchy. जिन tall structure organizations में multiple level of hierarchies होती हैं. A tall structure of organization has narrow span और उनका बहुत ही small या narrow means संकीर्ण या संकुचित. So, narrow span of management, that is under such a structure, a manager has a charge of only few subordinates. बहुत ही कम subordinates का charge होता है वहाँ के superiors को. Our next question is, responsibility always flows from what? Options are: option number 1, superior to subordinate; option number 2, subordinate to superior; option number 3, both A and B; and option number 4, none of the above. And the correct answer for this question is option number B, सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड्स, दैट सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. Okay, so our next question is, authority always flows from where to where? And the options are: option number 1, superior to subordinate या subordinate to superior; option number C is both A and B; and option number 4, none of the above. And the correct answer for this question is superior to subordinate. जो responsibility होती है वो subordinate to superior flow करती है और जो authority होती है वो superior to subordinates flow करती है. As per the concept of Henry Fayol, authority is the right to give orders and the power to exact obedience. Authority flows downwards
as the top management provides it to the managers and executives at different levels of management. It needs to be accepted from the below too, that is from the subordinates. Therefore, option number 1, superior to subordinate, that means authority हमेशा superior to subordinate flow करती है. Okay, with this last question, it's time to wrap up the session. Okay, so with the last question of this session, we are here for the winding up of our session, and here to share a very important information with all our students. We are offering a test series. For more updates, kindly WhatsApp your details on the number blinking on the screen and join our Telegram channel, that is VidyarthiPro online learning platform, for daily updates. Our Vidyarthi Pro Learning family welcomes all your valuable feedback, your queries, your suggestions in the comment section below, and feel free to contact on the given WhatsApp number. Stay tuned for more updates. Until then, keep revising and keep boosting your knowledge bank with our question bank. Thank you. Goodbye. Take care.